Hi viewers, a very interesting case I would be presenting through this video. ये है biased running of locomotive. या इसको दूसरे लफ्जों में असेंट्रिक रनिंग बोलें तो भी चलेगा. So biased running of locomotives can also be a cause of accident. How? आइए with the sample data of a case study, I'll be presenting the logic of what is biased running and how does bias running of a wheel set can lead to a derailment and become a serious cause of leading to wheel mounting and finally getting off the track. Let's first observe the wheel marks a locomotive traveled after the derailment. Just ये एक ट्रेन का लोकोमोटिव है. स्टार्ट किया ट्रेन ने फॉर डिपार्चर फ्रॉम अ स्टेशन और उसका जो लीडिंग मोस्ट पेयर ऑफ व्हील सेट था वो डिरेल हो गया. सो दिस इज समवॉट अ पिक्चर showing that locomotive, and let's see how it traveled. These are the wheel marks if we observe very minutely. So ये इस तरह से ये उसको ट्रैकिंग करते जाए कहाँ से मतलब व्हील ट्रैवल करके फाइनली माउंट करके एंड इट केम डाउन. दिस वाज द लीडिंग बोगी ऑफ द लोकोमोटिव and this is the middle axle hitting mark over the fish plate, and ये है अपना जो single lone leading wheel set आ गया है. And again we can have the same wheel marks observed in another video. So आप देख सकते हैं किस तरह कोई ज़्यादा ड्रैग नहीं, कोई ज़्यादा ट्रेवल नहीं. स्पीड समथिंग अराउंड 6 to 8 किलोमीटर्स में भी. तो इस तरह एक व्हील सेट का गिरना, हाउ डज इट हैव अ इम्पैक्ट ऑन द इंक्वायरिंग ऑफिशियल्स की किस वे में प्रोसीड करें एंड हाउ टू एनालाइज सच ए डिरेलमेंट. वेल, ऐसे डिरेलमेंट्स में अनटिल एंड अनलेस कोई मेजरमेंट लें प्राइमा फेसी देना बड़ा मुश्किल सा होता. हाँ, अगर आप के मन में एक है कि पहले इंजीनियरिंग पे डाल दो अपने, वो जो है उसको वेव आउट कराएंगे या जो भी करना होगा दे विल डू इट. दिस इज वन पार्ट, बट विजडम लाइज इन टू फर्स्ट have some measurements and then conclude on the prima facie cause. आइए, इंजन एक बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है जिसको देखने से आप कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं. दिस वाज द फोटोग्राफ विच वाज शेयर्ड. और अगर हम इसको ध्यान से देखें इस व्हील सेट को, तो ये एक कॉलर सा बना हुआ है सेकेंड, राइट. और ये देखिए, ये अगर ये टिप को देखें तो ये बड़ा शार्प सा है. दिस अ वेरी शार्प वन. सिंस इट इज रस्टेड, सो दीज आर सम स्कैप्स ओवर द थ्रेड. मेटल शेलिंग बोलिए, फ्लिक बोलिए, या वो ड्यू टू हीट जनरेशन से जो मेटल निकल जाता है, ओल्ड वन. एंड ये पूरा फ्लेंज का जो एरिया है ये फुल ग्रेजिंग है. सो यहाँ से अगर ये पॉइंट देखें तो वी कैन डिस्टिंग्विश
between the two faces. ये देखिए एक रेडियल लाइन सी बनी हुई है, and this entire flange has shining mark, means this is fully grazing with the gaze face. और ये यहाँ से एक इस तरह का डिप बना हुआ है. I'll try to illustrate the same thing in another picture. So ऐसे एक फॉल्स फ्लेंच टाइप का इसमें दिख रहा है. और there is another important feature, that this brake block is not centrally on the tire, but it is towards the end of the tread. तो ये मतलब जो इसका ब्रेक ब्लॉक है, दिस इज ऑल्सो नॉट सेंट्रली सिचुएटेड. अब क्या है, what we saw in the last photograph, so the wheel set has got some sort of a shape in this manner. So there is a gap due to tread wear. However, it will be measured and it will be seen how much it is. This is normally not be more than 5 mm, so then it is known as a hollow tire. So it has taken this shape. So what will happen now, what we were talking about, this total grazing, so this may have effect on the root thickness and the flange thickness. Let us see what we got in the measurements after taking the joint measurements of the locomotive. The loco, after derailment, re-rail होता है. re-rail होने के बाद we bring it to the loco shed. और लोको शेड में आजकल जैसे सर्कुलर चेंज कर दिया है, आई मीन द इंस्ट्रक्शन चेंज कर दी विद द न्यू सर्कुलर, कि आपको स्प्रिंग की जो डिफ्लेक्शन हाइट है दैट हैज टू बी टेकन ऑन टेस्ट बेंच. वेल, सो इंजन इज लिफ्टेड एंड वी टेक आउट द स्प्रिंग्स. और स्प्रिंग्स को वी हैव टू मार्क इट, कौन साइड का, फ्रंट एक्सल का, मिडल एक्सल का, एंड एक्सल के, फ्रंट बॉगी, रियर बॉगी, देन these are known as primary. These are all primary springs, inner and outer there are, and these are the secondary ones. So इसको हम लोग बॉडी को लिफ्ट करके वी देन टेक आउट द बोगी ऑल्सो, और फिर स्प्रिंग्स को अलग कर लेते हैं. इस तरह से स्प्रिंग्स का नंबरिंग किया जाता है. एंड नंबरिंग करने के बाद वी कैरी इट टू द टेस्ट बेंच. सिंस एक शेड में इसकी प्रोविजन नहीं थी, तो दिस हैड टू बी कैरीड टू अनदर लोको शेड वेयर द मेजरमेंट्स वर टेकन. और इसमें क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज, जो हम स्प्रिंग डिसमेंटल करते हैं, दैट शुड बी प्रॉपरली नंबर्ड, लेफ्ट राइट, एंड फ्रंट बॉगी एंड रियर बॉगी.
वेल फ्रेंड्स, फिर वो जो हम टेस्ट मशीन पे डाटा आया है उसका रिकॉर्ड बनाया जाता है. दिस इज जॉइंटली साइंड. सो दिस इज व्हाट वी गॉट. एंड मेजरमेंट्स में ये 4 स्प्रिंग्स जो हैं ये डिफेक्टिव निकले इन दिस टोटल लॉट ऑफ प्राइमरी स्प्रिंग्स में. So we can have the percentage of defective springs or the springs which lie out of the prescribed range of height under particular specific test load. तो इस तरह से चार्ट निकालते हैं and we keep a record of this spring deflection test. अब the most important part of the measurement हम जिसमें देखेंगे कि बायस्ड वियर क्या होती है. दिस इज द वोर्न व्हील प्रोफाइल. ये नया है एंड दिस इज वोर्न प्रोफाइल. ये लिमिट्स दी हुई हैं. यहां से यहां तक इज नोन एज रूट थिकनेस, और स्टैंडर्ड से हम अगर माइनस करते हैं देन इट इज नोन एज रूट वियर. मीन्स अगर 37.25 है तो उसमें से हमारा अगर रूट वियर 5 आ गया तो कितना रह गया? 32 रह गया. सो लाइक दिस वे. सो अपना 31.5 इज द वोर्न लिमिट एज पर दिस ड्राइंग. अब देखना हमको क्या है, दिस फ्लेंज थिकनेस से ये 29 है और ये 31.5 है. दिस इज न्यू का and this is worn profile, right? Now this thickness we'll see here on the right hand side wheel 32, 32, 31, 31.5, 32 and 31. यही corresponding एक्सल का जो सॉरी लेफ्ट हैंड व्हील साइड है उसमें देखिए ये 29, 29, 29.5, 29, 30, 30. What does it indicate? ये राइट साइड के जो फ्लेंज है ना उसकी जो थिकनेस है वो इससे ज्यादा है. मतलब ये साइड के व्हील इसको इधर को धकेलते हैं, फोर्स करते हैं इधर को रन करने में. सो इसमें वियर ज्यादा हो करके इसकी थिकनेस कम होगी. Now on the right hand side there is a forcing element which forces these left hand side wheels कि ये ज्यादा वियर टियर हो करके इसकी थिकनेस कम होगी. सेम इफेक्ट अब हम रूट वियर पे आते हैं. सो यहां में देखिए दिस इज द रूट थिकनेस हियर. कितना है? 31.5 स्टैंडर्ड है वोर्न आउट का रूट थिकनेस. यहां रूट वियर दिखा रहा है 1 mm, 1 mm, 1.5 to 1.5, while इधर में वियर जो है is to the extent of 4 mm. So flange thickness on left hand side wheel is less than right hand side wheel. The flange wear is more than, flange wear is more on left hand side. Similarly, root wear is 2.5 mm to 4 mm. यहां से ये 2.5 और ये 4 mm, और यहां भी देखिए 4.5 mm. यहाँ 1 mm है, यहाँ 4.5 mm है. So all 6 numbers of left hand wheels are more worn than 6 wheels disc on right hand side. I hope it is clear now that इस साइड के जो व्हील्स हैं ये ज्यादा worn out हैं as compared to this. और कुछ तो है मतलब worn out limit 29 mm पे भी पहुंचे हुए हैं. So that means this engine runs in a way so that
इसके लेफ्ट हैंड साइड के जो व्हील्स हैं उसकी वियर राइट हैंड साइड व्हील से ज़्यादा हो रही है। यह है असेंट्रिक वियर बोले या इसको बायस्ड वियर बोले। एंड इसके रीज़न क्या है वो हम आपको नेक्स्ट में दिखाते हैं, विदाउट यूजिंग पर्सनल नॉलेज, बट what is mentioned in the maintenance instruction book published by RDSO. This is the letter or the instruction जिसकी मैंने बात की थी। मे बी रिवाइज होते रहते हैं। दिस इज रिवीजन 1 of 2009. इट्स 15 years old, बट द बेसिस एंड बेसिक वो चेंज नहीं होते हैं। इसी का पैरा 20 में बोलता है, व्हाट इज बायस्ड वियर? The correct cause of biased wear should be identified with special emphasis to following aspect: brake block rubbing the wheel due to shifting. तो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है कि उसका जो ब्रेक ब्लॉक है वो आपको शिफ्ट होकर के एंड साइड में आया हुआ है और वहां में उसकी वियर कर रहा है। इट इज क्रिएटिंग अ हॉलो टाइप ऑफ वियर, आई मीन इन द सेंटर ऑफ द tread, causing it a hollow. Excessive lateral clearance between axle box and bogie pedestal. The main important is misalignment of bogie frame. Parallelism of bogie should be maintained. The variation in diagonal dimension of bogie should not be more than 3 mm. Now, this is a measurement which in field our mechanical counterparts do not give. Why? परफॉर्मा में नहीं है। माई सिंपल क्वेश्चन इज, व्हाट इज द आइडिया ऑफ टेकिंग द मेजरमेंट्स? हम क्यों लेते हैं मेजरमेंट? कि कुछ पता तो चले, और जब आपको ऑब्वियसली बायस्ड वियर मिल रही है, ये सब चीजें मेजर करनी चाहिए टू get to a reasonable cause of the derailment. अब ये थर्ड नंबर पे जो मिसअलाइनमेंट ऑफ बोगी फ्रेम है, जो पैरेललिज्म है, इसको हम ट्रेमलिंग बोलते हैं। सो इसको हमें जरूर देखना है। और बायस्ड वियर इज नॉट माई पर्सनल नॉलेज, इट इज फ्रॉम दी RDSO's letter. Then we have lesser longitudinal clearances between axle box. This is also a cause. Then we have wheel diameter variation may not be within permissible limits. अब ये और एक बड़ा विचित्र एस्पेक्ट है। ये क्या विचित्र एस्पेक्ट है? आपके डीजल लोकोमोटिव में ऑन द सेम एक्सल maximum wheel diameter variation permitted is 1.6 mm, और आपके जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स हैं उसमें जो परमिटेड है वेरिएशन, दैट इज 2.5 ऑन द सेम एक्सल आई एम टॉकिंग। बट उसके पीछे जो कोचेज या वॉगन चलते हैं उनमें एक ही लाइन लिखी रहती है IRCA पार्ट 3 and 4 में, देयर इज नो इन सर्विस टॉलरेंस ऑफ व्हील डायमीटर डिफरेंस ऑन द सेम एक्सल। दीज आर द लिमिट्स फॉर टर्निंग इन वर्कशॉप ड्यूरिंग सर्विस टायर डिफेक्टिव। अरे टायर डिफेक्टिव बस क्या दिखाती है आपको? एंड वाई देर इज नो इन सर्विस लिमिट फॉर वॉगन्स एंड कोचेज? मैंने RDI कर रखी है RDSO में, एक ही जवाब आ रहा है कि देर इज नो सर्विस। अरे मैं पूछ रहा हूं उसका लॉजिक क्या, वो तो बताएं। व्हाट इज द कैलकुलेशन विच मेक्स द व्हील्स हैविंग डिफरेंट डायामीटर ऑन द सेम एक्सल कैनॉट लीड टू ए डिरेलमेंट? कोई जवाब नहीं है RDSO का भी। आई कैन
in the next video show you what reply they have been providing me. And this is an aspect which needs to be looked at, examined into by higher officials. अरे अगर लोकोमोटिव में आपकी सर्विस टॉलरेंस है तो कोचों ने क्या बिगाड़ा, वॉगन ने क्या बिगाड़ा? क्या मान लेंगे तो 25 mm 30 mm डायमीटर होने से भी डायर डिफरेंस ऑन द सेम कोच कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है? How is it possible if there is a limit to the wheel diameter difference on locomotive? और उसमें भी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव एंड डीजल लोकोमोटिव का व्हील डायमीटर इज 1092, एक में 2.5 रखी है, एक में 1.5 रखी है. इसका लॉजिक कुछ तो कैलकुलेशन होगी. मैंने इंफॉर्मेशन मांगी, नथिंग हैज बीन प्रोवाइडेड. दिस इज आवर आरडीएसओ. So viewers, from the above discussion we have seen that the engine had 2 primary inner and 2 outer, means 4 springs out of tolerance. Due to biased wear, the wheel set which derailed has developed hollow tire stroke double flanged shape. हमने फर्स्ट पिक्चर में, सेकंड पिक्चर में देखा. And as per the RDSO MP discussed above, we need to measure the squareness of the bogie frame and also other items listed in connection with the biased wear to control biased wear on the locomotive. However, for the purpose of the derailment investigations, there is sufficient ground and reason to record as biased sphere wear reaching almost worn out profile of 29 mm flange thickness, so as to fix it as the cause of derailment associated with suspension system. So this is the systematic approach towards analyzing the various parameters जो हम रिकॉर्ड करते हैं, उसको माइन्यूटली हमें एग्जामिन करना पड़ता है, कोरिलेट करना पड़ता है. और biased wear means there are forces on the right hand side which are forcing towards left hand side, and a situation may arise where the wheel can mount and get offloaded. जैसा कि इस केस में हमने इसकी ड्रिलमेंट के एनालिसिस में जो सारे पैरामीटर्स हैं उनको हमने कोरिलेट करके आपके सामने प्रेजेंट किया है. Well viewers, thanks for watching. बहुत दिन से I was thinking of making a video on a very new reason, new cause, new subject. So anyhow, I am thankful those who refer some cases to me. So I am able to study more and more and give a piece of suggestion what I have gained throughout my experience. So इस वीडियो में हमने क्या देखा है कि जो रिवाइज्ड इंस्ट्रक्शंस हैं रेलवे बोर्ड की, अकॉर्डिंग टू द रिवाइज्ड इंस्ट्रक्शंस कैसे हम स्प्रिंग डिफ्लेक्शन टेस्ट मशीन पे करते हैं. दिस इज व्हाट आई कुड गिव सम ग्लिम्पसेस ऑफ दैट. वेल, आई डिड नॉट शो यू द ड्राइंग्स आर अवेलेबल, एंड as per the drawings only we analyze the spring height and the load. So every spring has got its drawing and every drawing has got a test load and working height. So उस हिसाब से हमने as per revised instructions I try to show you the system and the machine and the way we do the test. So next was we have seen how डीप फ्लैंज बोले या आई एम सॉरी डबल फ्लैंज है, एंड हॉलो टायर कैसे होता है, किन कारणों से होता है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड द मेन टॉपिक ऑफ दिस वीडियो व्हाट वी डिस्कस्ड इज बायस्ड वेयर. बायस्ड वेयर किस तरह से होती है. दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शो ऑल माय व्यूअर्स इन मोस्ट पॉसिबल एंड इजी वे. It's very difficult from distant places to collect all this data and put it in the form of a video for your
viewing, and of course I feel honored to present such data and discuss along with you. So I hope you like this video on the subject topic of what is biased wear, and it's not my personal knowledge जो मैं आपसे share कर रहा हूँ. This is what is mentioned in the books, manuals, and how we correlate those parameters with the given instructions to find out the possible cause of a derailment. Hope आपको अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी है एक लाइक तो बनता है, और लाइक बनता है. आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बिकॉज देयर आर 60+ वीडियोस नाउ इन दिस चैनल, and this channel is absolutely for PVA engineers and the inquiring officers. Use it. Please do comment in the comment box. That helps me to study more and put forth the possible data available with me. Thank you once again.